Hi, welcome back to another episode on Varnit's podcast. आज के एपिसोड में I'm going to discuss a couple of things around powerlifting and heavy weight कैसे उठाया जाता है, क्यों उठाया जाता है, किस तरह उठाया जाता है, ये सब चीज़ें डिस्कस करूँगा. डिस्कस करने के लिए I have invited Mansha Jaiswal, who has been coaching people for quite some time. She is interested in powerlifting. आप Instagram उनका देखोगे तो आपको overwhelmed सा feel होगा. And welcome to my podcast, Mansha. I hope किसी को overwhelm सा feel ना हो. Um, it's just I believe that anybody can do it if you like put your mind to it. It's not that hard. Like मेरा सबसे पहला जो टॉपिक जो I wanted to discuss was your experience with powerlifting so far. Not just like जिम में जाके एक्सरसाइज करना. It's like particularly powerlifting के साथ कैसा एक्सपीरियंस रहा है, the highs, the lows. Okay, so I actually started training 2020 में. Like I was training before that, but I took a long break. Injuries बीच में हुई थी and all that. So cutting to the chase, I started lifting again in September 2020 because I felt उस time तक I left my corporate job. Okay, I knew for a fact that this is not the life I want to live. And what happened as a result of that was I wanted to dabble in this industry like professionally full time. So when I started, I was actually fat, and you know how it goes, like जो दिखता है वो बिकता है वाली चीज. So बिल्कुल वही हुआ था. So I was like, कि let me just get into it. Let me start lifting again because it is something that I enjoyed really much. I started doing it again. I lost a lot of weight and fat. But then जब powerlifting में कैसे मेरा transition हुआ, because I used to love to lift heavy weights. मुझे कभी दिक्कत नहीं होती थी. And I believe it was around when I did like my first ever like 110. It was a 110 deadlift that I did. What happened was that Vedant actually, because we started talking, he went on a live with me and all that. So he offered to help out from time to time because he saw potential, I guess. And because मेरा ये मानना है कि if you actually value a person's knowledge and their time, which you should, you pay them. You pay them what they're worth or what they're at least asking, without being, you know, Yeah, I don't want to say the word, but yeah, you get can if my you point. want to, but yeah, sure. But yeah, so we started working together. At the time, I had like a pretty like shit everything. मेरी lifts कुछ खास थी नहीं. I did not know how to do like things with technique. I was strong, sure, a bit. But when I started working on certain techniques, I think this is the part where most people are so confused, right? कि form क्या है, technique क्या है, and people just like shoot in the dark, I guess. कि especially on Instagram, oh भाई आपकी form गलत है, without actually understanding what it is. So yeah, that was it. And I guess a year later today, this is me now. That's all. Like also I don't I cannot tell you like the highs and lows. The lows are basically just I would say it is hard. Like it is really hard on you because you have to take out a chunk of time, and I'm not even exaggerating. Like you have to take out a chunk of time to do enough quality volume. When I say quality volume, it means not half-assing everything every single day. So if you go to the gym, अगर आप 3 दिन भी जाते हो, you pour everything out there. That's it. Makes sense. Like जो मैंने नोटिस किया है कि जो बिगिनर्स होते हैं मोस्टली दे आर हाफ एसिंग थिंग्स बिकॉज एक तो गाइडेंस नहीं होता है तो इट्स अंडरस्टैंडेबल बट Yeah. इवन व्हेन इट कम्स टू कोचिंग तो क्वालिटी कोचिंग भी इज लाइक अभी भी स्कैरसिटी है उसकी आई फील
I feel that way. I think so because I feel मैंने ये किसी और कोच को भी बोलते हुए सुना था that there are so many coaches in India now, so many coaches, but the quality coaches are still rare. Yeah, एग्जैक्टली दैट यही मेरा एक थॉट आया जब यू मेंशन की राइट कि 3 दिन भी जिम जाओ तो यू हैव टू गिव इट ऑल नहीं तो एटलीस्ट उसके क्लोज तो जाओ, वहाँ तक जाने का भी अलग ही माइंडसेट होता है. यू नीड टू लाइक फील दैट थोड़ा सा पेन वाला चीज़ है ना, लाइक द गुड काइंड ऑफ पेन ऑब्वियसली इसमें. Yeah. सो अब मेरा नेक्स्ट पार्ट जो डिस्कस करना था वो इसी के राउंड था कि व्हाट डज इट एक्चुअली टेक टू ट्रेन हार्ड. मतलब ट्रेनिंग तो सब कर लेते हैं, रिक्रिएशनल लिफ्टिंग तो हर कोई ही कर लेता है एक ना एक, तभी इतने केसेस होते हैं कि मैं 4 साल पहले जिम जाता था फिर छूट गया 2 महीने में 3 महीने में एंड ऑल दैट. ये स्टोरी तभी आती है बिकॉज वो लोग रैंडम गए, थोड़ा बहुत किया, हो सकता है रिजल्ट मिला नहीं मिला जो भी है, बट व्हाट डज इट एक्चुअली टेक टू ट्रेन हार्ड. Okay. So it's basically, I don't know if I should say this, but it pays off if you've had like a very troubled childhood. Because then you kind of like, कहते हैं ना कि, you sort of have something that you need to take care of, like an aggression or rage, that you need an outlet, sort of, to get rid of it in a way, in a constructive way. Okay. Yeah. That is not harming the society in general. So I believe that helps, but if it's not there, even then I think that you just go there and you do whatever it takes to literally, आपके में अगर अगर आप कुछ और नहीं सोच रहे, सिर्फ इतना ही कर रहे हो कि आप सिर्फ जिम जा रहे हो, like for example today, I did not wanted to go, I really did not wanted to go, but what I did, I just picked up my ass and just went to the gym. ठीक है. और जब एक बार अगर आप चले गए वहां पे हाफ एस करने का मतलब नहीं बनता. You know what I mean? Yeah. It's like कि if you are actually going through the effort of actually going to the gym, that's half the battle that you have actually won. Okay. और आप आलस किस चीज में करते हो वहां पे, एक सेट कम करने में या फिर नॉट गोइंग टू फेलियर एंड ऑल दैट इज नथिंग compared to like just getting from your ass up and actually going to the gym. बाकी सारी चीजें you learn with time, but I think most important part where people I think lack is the fact that they cannot get over themselves, like their mind. Mhm. It likes comfort. ठीक है. हम आप मुझे ये बताइए, थ्रू आउट ह्यूमन हिस्ट्री व्हाई हैव we being able to develop so many good things, technology and all that, right? Comfort के लिए. Yeah. So हमें दर दर ना भटकना पड़े अपने पूर्वजों की तरह. Okay. So I think there is a deep connection with comfort, and when people get too comfortable, they're like, ठीक है नहीं करना. And the reason most people give, and I find it really funny, the reason most people give to not actually working hard in the gym is, oh, we don't ego lift, bro, please. You don't even lift, bro. एग्जैक्टली. ईगो लिफ्टिंग के लिए लिफ्ट करना जरूरी है. Yeah. ठीक है. आप 5 किलो के डंबल से कब तक क्या क्या उखाड़ लोगे? यू नीड टू चैलेंज योर बॉडी. Here's the thing, your body is not going to change until it's challenged. That goes for everything in the universe. It's a fucking law. Yeah. Okay. When it's the first law of thermodynamics. और Okay. और आई थिंक द बॉडी इज स्ट्रॉन्गर देन मोस्ट पीपल थिंक कि इतना वीक है या ऐसा कुछ नहीं. इट्स लाइक वे टू क्रेजी स्ट्रॉन्ग, बहुत स्ट्रॉन्ग है अपनी बॉडी. Your body can do wonders if you let it do it. प्रॉब्लम यहाँ नहीं है, प्रॉब्लम यहाँ है. this is the thing. This usually जो barriers होते हैं वो psychological होते हैं, physiological इतने होते नहीं है. Alright. आज मैं PR मार के आ रही हूँ, bench का वो भी. Okay. Something that is not my strong suit. Nice. You know why? You know why I was able to do that? I don't think about it. Like मैं ये नहीं सोचती, okay, ये बहुत भारी है and all that. No, it's what I think in the moment is, it's a task, and either you have either of two options. ठीक.
या तो आप कर लोगे, and from that moment forward, from that moment on, you can move forward in life to other challenges, to other things, right? Or what you can do is the second thing, not do it and stay stagnant. जो मोस्टली लोग चूज कर लेते हैं. They are fine with this. They are absolutely fine with stagnation. I'm sorry about that. Yeah, that's fine. They're fine with stagnation. Why are you fine with staying where you are? I never understood that. So the whole point of actually pushing yourself is to become better. Okay, जो कहते हैं ना कि it's you versus you. नहीं, I would say actually pick somebody who can be a rival. Okay, जब आप देखोगे ना किसी को अपने से बेटर करता हुआ, you'll feel that jealousy inside you because तब आग लगती है. हाँ exactly. और जब आप you are a human being for God's sake, okay, you are going to feel all of the human emotions which are recorded throughout history. Jealousy is one of them. Okay, so you can't be like no, it's only me versus me, I only compete with myself. Really? And that shows in कोट्स बनाने के लिए अच्छा लगता है वो सब, फिलॉसफी थोड़ा सा मारने के लिए. I find कि कुछ ज्यादा ही पॉजिटिविटी हो जाती है. And life is not all positives and all star shines and all that. There has to be a balance which is supposed to be maintained, right? There has to be some chaos in you. You have to create that chaos. वरना आपको कहाँ से वो aggression आएगा? See, negativity gives rise to negativity. Aggression is a negative emotion. Okay? You need some aggression to be able to lift a particular weight that you don't think you can. Okay? You need to have some level of aggression in you. और अब वो aggression कहाँ से आएगा? जब तक आपकी जिंदगी में कुछ ऐसा नहीं हो जाता that you are not okay with, or you see somebody else progressing in a way that you can't, use that. Yeah. And like even if like you have seen जितने भी अच्छे लिफ्ट्स होंगे like इंडिया के हों चाहे बाहर के हों, you don't see someone just casually walking up and प्यार से उठा रहे हैं. लाइक देयर आर इंस्टेंसेस जहाँ पे है कि कामली उठाए, बट मोस्ट ऑफ द इंस्टेंसेस जो प्री लिफ्ट रिचुअल करते हैं मोस्ट ऑफ द लिफ्टर्स, इट शोज सम काइंड और द अदर ऑफ एग्रेशन. आई एम नॉट सेइंग इट डायरेक्टली रिलेटेड क्योंकि गुस्सा करके आ गए वहाँ पे किसी से लड़ाई करके आ रहे हैं, इट्स नॉट लाइक दैट. बट आई गेस यू बट आई होप यू नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, राइट? कि I get it. सो लाइक कोई थप्पड़ खा के जाता है, चला जाता है वहाँ पे. So those are like some of the videos that went viral. But yeah, I totally get the point of that aggression which you were saying. That's why I have like massive respect for the gym bros जो करते हैं बस जाओ करो, आज करके आया है भाई अपना, वैसा वाला जो माइंडसेट है ना. तो Exactly. एंड लाइक मेरे भी जब लाइक आई हैव बीन लिफ्टिंग फॉर ऑलमोस्ट 8 years नाउ, बट जो मेजर मैंने गेन्स बनाए हैं अपने एक तरह से वो मेरे जिम ब्रो फेस के ही हैं. उसके बाद थोड़ा सा रिकवरी ये सब में टाइम लगाया, बट जो भी लाइक मेरा क्रेडिट दूंगा उस गेम्स के फेज़ को, वो उसी फेज़ को दूंगा जब आई वेंट ऑल इन. 2-2 घंटे जा रहे हैं, जिम कर रहे हैं, ये सब कर रहे हैं. लाइक हाँ आई नो कि रिकवरी और ये सब इफेक्ट हो रहा था, बट आई वॉज यंग उस टाइम, काफ़ी यंग, तो मेरा बॉडी वॉज एबल टू टेक ऑल दैट काइंड ऑफ स्ट्रेस, फिजिकल स्ट्रेस. एंड दैट मेक्स मी थिंक कि अपना बॉडी इज़ केपेबल ऑफ टेकिंग वे टू मच स्ट्रेस देन वी लाइक अंडरस्टिमेट करते हैं अपने आप को, बॉडी को अपने. लाइक उसको थोड़ा सा वेटेज दो, उसको थोड़ा इज्जत दो कि कर लेगी, करो जाके, लेकिन एटलीस्ट करो उसको. Can I give some perspective on that? Yeah, sure. Because I don't think people understand this particular aspect, and I find this to be very beautiful and very profound in a way. So I'm into astronomy and cosmology and all that. जो लोग मेरे को नहीं जानते हैं उनको नहीं पता होगा. So here's the thing: nature is a beautiful and very creative recycler. Okay, everything that you see around you is recycled, you and I included. Okay, we are just recycled stardust. All right, now we basically are born of things, like we are made of things which were once a part of a star, like a big star. Okay, massive star.
Now, from there to here, I think you would think that a star is made up of things which is sturdy as hell, right? Hmm. And um, I don't think people realize what kind of things that their body actually are subjected to on a daily basis, by the way, and it doesn't affect it. आप जिंदगी जीते हो without actually registering all of those things. अगर आपका ब्लड प्रेशर उतना नहीं होता जिस हिसाब से है, the air pressure would have flattened us. Okay, Yeah. the fact that we are able to stand on our feet and able to do things while being, staying upright and erect, um, we have to give credit to our sturdy bones. Because again, अगर आपने देखा होगा कि astronauts, when they come back from a space mission, right, they can't stand up. Do you know why? Because their Gravity. bones have kind of forgotten how it feels to be standing on, like, when there is gravity, when there is enough gravity. Give some credit to your body. Yeah. It's that beautiful. And when people underestimate the amount, like unko zara sa pain hota hai, and they're like mujhse nahi hoga, and I'm like, Hmm. Got it. so yeah, sorry about the whole philosophical thing, but I find it to be really, really, नहीं, दिस इज समथिंग नया एंड यूनिक जो पर्सपेक्टिव इस तरह से मैं नहीं मैं आई मीन आई थिंक डीप एंड ऑल दैट वो सब शिट रहता है, बट लाइक इस वे में नहीं सोचा, इतना दूर तक अभी नहीं मैं उस लेयर को अनकवर किया था, बट या इट मेक सेंस, इट मेक सेंस। बट या सो अभी अभी आ जाते हैं कि वी टॉक्ड अबाउट कि हार्ड ट्रेनिंग कैसे करना है, एटलीस्ट अप्रोच क्या रखना है, कैसे करने वाला चीज़ तो बाद में आ जाता है कि कैसे हाँ, जो भी है, बट लाइक एटलीस्ट माइंडसेट क्या रखना है उसके लिए कि यू जस्ट गो, थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट डालो। बट जैसे मेरा भी एक टाइम पे गोल था कि मुझे 100 kg का डेडलिफ्ट करना है, लाइक जब आई स्टार्टेड आउट, स्क्वाट 100 yeah. kg करना है, बेंच 100 kg का करना है। तो ये सब चीज़ों के लिए स्टार्ट किधर से अपने को करना चाहिए? लाइक सपोज मैं बिगिनर हूँ, तो व्हाट वुड यू सजेस्ट? If you want to do a 100 kg deadlift, start with doing deadlifts pretty often. See, I'll tell you something, and this is not something which is क्या कहते हैं उसको, नॉर्मल, नॉर्मली ये कोई बताता नहीं है, बिकॉज ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं होता. Strength is very movement specific. Okay, the more you practice a specific movement, the better you get at it. It's kind of like when you start driving. ठीक है, शुरुआत में how shit are you? Pretty shit, या right? But then when you like gain some expertise because you are doing it consistently enough, and you're doing it enough, like आप 2 मिनट के लिए ड्राइव करके नहीं रह जाते हो, you actually go on a drive like at least for 10-15 minutes or whatever, right? You are driving for a distance. So it takes time. Again, time, जितना आप फ्रीक्वेंसी करते हो, कितनी कंसिस्टेंटली वो चीज कर रहे हो, और उसमें एक्चुअली आप कितना एफर्ट लगा रहे हो. That all of these three things which are very underrated, but it counts. Okay, अगर आपको डेडलिफ्ट में एक्चुअली अच्छा होना है, स्टार्ट डूइंग डेडलिफ्ट्स. व्हाई डू यू थिंक कि पावर लिफ्टिंग स्पेसिफिक जो ट्रेनिंग होती है उसमें आप एसबीडी पे बहुत ज्यादा ध्यान देते हो? एसबीडी मीनिंग स्क्वाट, बेंच एंड डेडलिफ्ट. Why? Because that is the movement. Those are the movements that you have to perform. And in order for you to be able to do your best on meet day, you have to be proficient in it. Kind of like being a coach, right? You need experience. Good. Like if you don't have experience and you have just knowledge, are you a good coach? I don't think so. If you have knowledge and experience, are you a good coach? Yes, you will be, because then you'll have a better understanding of how to deal with actual human beings, right? या So from my perspective, it is this, that you just do what is necessary to do. Common sense hai. It's just common sense. You do what is necessary for achieving that particular thing. If you want to have like a 100 kg squat, start with the amount of squats that you're comfortable with. Do that enough.
not junk volume. Volume, लोग कहते हैं ना कि volume is the king. No, it's not. There's so many different variables which actually account for a lot of things, right? आपका volume है, but it's just one bit of the whole like story. So there are a few things that you can do. Like if you want to squat 100 kilos, right? अभी आपकी capacity सिर्फ और सिर्फ let's say barbell की है. So सिर्फ आप barbell से try practice those movements, 3 set कर लो, and then try to build muscle. The simplest way and the most like non brainer type की जो no brainer type की चीज होती है ना वो it's just that कि just grow muscle. That's it. So to grow muscle you kind of have to challenge that muscle. ठीक है? Your body doesn't grow unless you challenge it. As simple as that. कुछ भी ग्रो नहीं करता unless see आपका खुद का दिमाग भी ग्रो नहीं करेगा. The reason there are 12 different standards in school is because these are different levels of challenge for your brain to be able to develop. Mhm. It's as simple as that. कोई I know people like making complicated shit. It's not Yeah. that complicated. That's what I wonder, like for the most part. Like I got into this field around 2018 when I started coaching people वहाँ से. उससे पहले like खुद को and दोस्तों को जैसे थोड़ा बहुत बता दिया, यही रहता था typically. Everybody starts that way. Yeah, exactly. So like जिसको like when I entered into the coaching space तब हाँ थोड़ा सर्टिफिकेशन करना, पढ़ाई और करना, चीज़ों के बारे में जानना, टेक्निकल चीज़ों के बारे में जानना. बट ऐसा नहीं है कि बहुत कुछ चेंज हुआ उसके बाद से. इट्स लाइक कि द बेसिक्स विच आई बिन फॉलोइंग शुरुआत से वर द सेम, लाइक कंसिस्टेंट हार्ड ट्रेनिंग. इनफैक्ट मुझे कभी कभी ये भी लगता है कि जब ज़्यादा इन्फॉर्मेशन भी आ जाती है ना किसी के पास तो ट्रेनिंग उसकी बहुत हल्की चली जाती है, वो बहुत कंप्लेसेंट और लीनियंट हो जाता है. लाइक अरे मेरा ये आरपी इतना क्लोज जा रहा है, आ रहा है यार, ये हो रहा है, वो हो रहा है, मतलब जो ज़्यादा मतलब जिसको आ जाती है चीज़ें बेसिकली. ये मैंने नोटिस किया क्योंकि मेरे जिम में भी मैं कॉन्वर्सेशन अब सुनता हूँ ना, क्योंकि अब काफ़ी यूट्यूबर्स बनाते हैं इस पे वीडियो. Oh yes. तो इट्स लाइक वेरी कॉमन कि वो तो अपना हार्ड ट्रेनिंग कर रहे हैं मस्त, अपना उड़ा उड़ा के, और मस्त वीडियो जिम ब्रो वाली ट्रेनिंग कर रहे हैं. लेकिन हाँ, लेकिन कॉन्सेप्ट भी सिखा रहे हैं कि ये चीज़ें हैं. बट लेकिन जिसको कुछ नहीं पता है, जिसको 2 हफ्ता हुआ है जिम जाते हैं, वो अपना आरपीए कैलकुलेट कर रहा है बैठ के कि अरे यार आज इतना मेरे को लगता है कि 1 रेप ही बचा था या 3 रेप बचा था. तो ये सब चीज़ें दिखता है ना, तो समझ आता है कि मोस्ट ऑफ द पीपल डोंट डू हार्ड ट्रेनिंग. जो बेसिक एसेंस है इसी जो इस पॉडकास्ट एपिसोड का, कि ट्रेनिंग को, वेट लिफ्टिंग को, जो भी है, जिस स्पोर्ट में भी कर रहे हो, नॉर्मल रिक्रिएशनल लिफ्टिंग भी कर रहे हो, यू हैव टू मेक गेन्स, राइट? चाहे अब Yeah. जिस लेवल पे बनाओ, लाइक जनरल हेल्थ के लिए भी बना रहा है कोई, मसल इज़ लाइक सबके लिए अच्छा है, फ़ायदा ही फ़ायदा है मसल का रखोगे तो Yeah. वैसा चीज़ है. But yeah, the basics still remain the same. Even like you mentioned it very clearly, 100 kg वाला चीज़ है. Like 100 kg is just a number. हो सकता है पहले पहुंच जाओगे आप उस नंबर तक, हो सकता है कि थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा, depends on individual. But you have to give enough time to it. And frequency is like the basic thing जो करना चाहिए. मैंने अपने ट्रेनिंग में जो गलती की है, फ्रीक्वेंसी की कमी की है. आई यूज टू फॉलो दैट सिंगल मसल वाला चीज़ ना फॉर सो लॉन्ग. मतलब 2-3 साल मैंने किया है. आई मेड गेन्स बट आई कुड हैव मेड सो मच मोर गेन्स. So मुझे much more gains. हाँ Yes. एग्जैक्टली. जो रिग्रेट होता है ना मुझे एक चीज़ का, इट्स नॉट लाइक कि मैंने 2 घंटा स्पेंड किया है, 2 बार जिम गया था दिन में, ऐसा नहीं दिक्कत होता है. दिक्कत ये है कि मैंने सिर्फ एक मसल को किया है ट्रेन. ये लगता है कि वहाँ पे कितना गेन्स मैंने मिस आउट किया है. बट दैट्स फाइन, ठीक है, अब पता है, अब नहीं करूँगा मिस्टेक, दूसरे को नहीं करने दूंगा. ये सब चीज़ें हैं. Yeah. या I think most people don't realize कि जो different muscle groups आपके होते हैं, um, there are certain muscle groups that you can train several times a week. या एग्जैक्टली. More than like अगर आप 5 दिन जिम जाते हो, आप 5 दिन कर सकते हो by the way. But then there are certain muscle groups which are larger in size, and because of that, you kind of have to give them slightly more time to recover because वो जल्दी जल्दी recover नहीं होते हैं. And those will be the type of muscles or the group of muscles rather जो काफी heavy चीजें उठा सकते हैं. Take your legs for example, your lower body, 55%. 55% of your body is your lower body. ठीक है? Your legs, your glutes, your calves and all that. ठीक है? So I would say कि as a general rule of thumb, if you want bigger shoulders, train shoulders and go ham on them.
go ham on them. Okay, you can train your shoulders multiple times a week, depending obviously on the person to person की recovery rate कैसा है, क्या है, क्या नहीं है. ऑब्वियसली ये चीजें नोटिस करनी होती है, बट जो लोग जनरली कहते हैं RIR1 RIR2, ब्रो आपको पता भी है कि आपका फेलियर है कहाँ पे Yeah, exactly. before actually saying reps in reserve. Reps in reserve is actually a pretty advanced technique which I don't even use. So as a general rule of thumb, I would say just make sure कि आप एक और rep जब निकाल पा रहे हो ना, उसके बाद आप 2 rep और कर सकते हो, ठीक है. एंड फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव, अगर जब तक आपके शक्ल बिल्कुल ये नहीं बन रही, देन यू आर नॉट एक्चुअली पुटिंग इन इनफ एफर्ट्स. आई डोंट थिंक इससे बढ़िया तरीका है विजुअलाइज करने का. There I'm have to be not some shitting you. directions होते हैं, पता चलता है facial expression से. I am not shitting you. This is what I watch in my clients' videos half the time. I just watch their facial expressions. You can't fake certain expressions. You cannot fake them. Okay, and वो दिख जाता है जब you're actually putting in the effort. Yes. How simple is that? Exactly. Actually काफ़ी सिंपल है, इतना भी कॉम्प्लेक्स नहीं है. बट हाँ, लेकिन यहाँ पे एफर्ट का हम लोग बात कर रहे थे, बट देन इट कम्स टू थोड़ा सा रिकवरी, राइट. रिकवरी भी चाहिए, रेस्ट भी चाहिए, बिकॉज जस्ट गोइंग ऑल इन हर बार हर दिन या जितने दिन भी जा रहा है कोई, दैट वोंट बी इनफ. रेस्ट एंड रिकवरी आर लाइक द दूसरा पार्ट ऑफ द इक्वेशन जो इक्वली इम्पॉर्टेंट है. आई एम नॉट द वन टू से, बिकॉज मेरा रेस्ट इज़ लाइक काफ़ी ख़राब, like for the past couple of months. So same, but I know things. Yeah. Like we know things. Exactly. We know things and we can guide people, but we are also hypocrites. Yeah, that's pretty much established so right now. like ये disclaimer हो गया, but like how to manage the rest and recovery part of the hard training or training, let's just say. So what basically we do at the gym is we cause micro trauma to the muscle, which basically means कि हम अपने muscle को तोड़ रहे होते हैं, in the very simplest of things, right? Yeah. The actual growth of muscle, जहाँ पे आपका muscle बनता है, that is the recovery part. All right. The recovery includes your nutrition. To be like very simple, nutrition जो आप खा रहे हो, जो आप अपनी body को दे रहे हो repair के लिए. Okay. Then comes in your sleep. Okay, your sleep is actually one of the most essential things that you can have as a person for optimal recovery. हम में से कौन प्रायोरिटाइज करता है सोने को? लाइक मेरे कोच मेरे को बोल बोल के परेशान हो गया दैट स्लीप फॉर एटलीस्ट 7 hours, बट देन वी कांट all manage 7 hours non-stop, and I understand that, but then how are we managing it? And one of the most important things which we should manage as human beings is stress. Okay, because training is also a stress on your body. All right. तो दूसरे जो stressors हैं अपनी जिंदगी के, वो हमें manage करना आना चाहिए, because then if we don't, then it becomes chronic, or chronic stress, do I need to say कि कितना खतरनाक होता है? So yeah, you're probably like most people don't care. It's fine, you don't have to initially, but then when it comes to like when you transition from a beginner to an intermediate to like sort of novice advanced, ठीक है, then आपको ये सारी चीजें पता लगने लगती है, because तब आपके लिफ्ट्स उस तरीके से नहीं जाएंगे जैसे जाना चाहिए. You can feel the difference उसमें. Yes, because as a beginner, how much weight you can lift, right? And you don't do it for like intensity wise, it's pretty low. You try to do as much as possible with the right tech, so that when you do get stronger, you preferably don't do certain things which may cause injury. Injury is very multifactorial, but we'll not get into that. But yeah, so yeah, you can increase the likelihood of getting injured by doing in a very weird way. ठीक है? Yeah. Maybe not. वो वाली चीज है. But it is a good idea to do it with the right tech, because अगर आप deadlift का करने का भी तरीका होता है, right?
एज एन एग्जाम्पल डेडलिफ्ट करने का भी तरीका होता है. अगर आप वैसे नहीं कर रहे, देयर इज अ गुड चांस दैट यू आर नॉट फुलफिलिंग योर पोटेंशियल. The amount of weight you can actually lift with the right technique is going to be different from you just doing whatever. Yeah. Yeah. So in my mind it is basically that. और frequency जहाँ पे हम लोग ने बात की थी, यहाँ पे वही चीज आती है कि frequency ऐसी select करिए जो आपको optimal लग रही है. Like you're not, if you are sore, like sore enough to walk, okay, don't go to the gym the next day. एक दिन का रेस्ट दे दो अपनी बॉडी को. Then that's totally fine. You don't have to like be active throughout the day. I'm not saying that. Be active throughout the day, but then you don't have to like go to the gym just because you said you know कि मैं 6 दिन जिम जाऊंगा शुरुआत में ही. And that is the most stupidest thing, by the way. If you have never done it before and if you go full throttle, it is not going to end well. Okay, so one step at a time is something that I would definitely recommend, which is why mostly I tend to either go with 2 days a week initially or 3 days a week. But on 3 dinon mein give it your all, right? So that again recovery or rest is going to be very individualistic, for which you need experience. Experience tab aayega jab aap consistently wo cheez karoge for a period of time. If you leave that in between and if you don't do that often, how are you going to be aware of your body? How are you, like आपको कैसे पता चलेगा कि आपका शरीर आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा है? You don't listen. You are not doing the things that you're supposed to do to be aware. Yeah. That is the point. So, good nutrition, good sleep, managing your stress well. If you can't, do certain things which actually help out. Like I, as an example, मैं क्या करती हूँ? Either meditation. I know it sounds very cliched and very cheesy, but either I go for meditation or I just watch a stand-up. Laughter is the best, absolutely best medicine for any sort of stress because it's going to release certain happy neurotransmitters in you. And that is based, you are a chemical being, come on. ठीक, so just doing certain things will actually trigger a response in your body, which is exactly what you want. As simple as that. So if you can't have something like ऐसे, artificially create कर दो उसको. Makes sense. It makes sense. And the like you mentioned, right, कि 2 से 3 दिन वाला part जो मेरे को strongly relate किया अभी कि 6 दिन चले जाते हैं and I see a lot of people burning out just because कि 6 दिन गए, 12 दिन गए, 2 हफ्ता चले गए, मान लो किसी तरह पुश करके, दर्द हो रहा है, हाथ ये हो रहा है, वो हो रहा है, सोरनेस रहेगा क्योंकि आप 6 दिन जा रहे हो, कभी गए नहीं हो ज़िंदगी में 6 दिन, Yeah. वो कर रहे हो, फिर उसके बाद इट बिकम्स लाइक दैट कि 2 हफ्ता गए, 3rd वीक से कुछ ना कुछ होता है कि यू वांट टू जस्ट स्टॉप गोइंग वहाँ पे कि पेन ज़्यादा है, थोड़ा सा रेस्ट करते हैं फिर जाएंगे, एंड दैट साइकिल जस्ट goes on and on. Keeps on repeating itself. Yeah, exactly. And I don't blame those people. Like I took like a 3 week break away. I recently started lifting again 2.5 weeks back, just because I actually. Sorry. Same. High five. So, yeah, I think taking a break is fine, but you should be like, I have done it long enough to be able to take a break for that long. ठीक है? And I like it's like 3 हफ्ते के break ने the thing is मैं इतना chill बोल रही हूँ only because I don't really take it that seriously. Okay, some people do, which is fine. But if you have a particular goal and if you stop going to the gym 3 हफ्ते, trust me, it's going to set you back on your performance. It has me, ठीक है, क्योंकि जो इंसान 55 किलो की बेंच आराम से कर लेता है उसको 45 किलो की बेंच भारी लग रही थी. So it's going to happen, and that is a part of it. Like I understand it being a part of the whole process because I took a break and that was to be expected. I'm a human being at the end of the day. So I was like, okay, no problem, जितना हो पाएगा करेंगे. And then you take what you get on that day. On a bad day, you just take what you get. Take, do whatever you can, go home,
eat good food, rest, and come back and do it again. Most people, what happens is, और मैंने ये चीज देखी भी है, वो हताश हो जाते हैं जब एक पर्टिकुलर गोल वो मीट नहीं कर पाते, राइट? And I think, Varnit, you would know that how hard it is to actually achieve goals, the goals that you really, really strive for. Yeah. If it's worth having, you have to put so much efforts into it, right? That's why I made a tweet आज ही मैंने दोपहर में रैंडम थॉट आ रहा था, आई मेड अ ट्वीट कि थोड़ा अच्छा मसल बिल्ड करने के लिए थोड़ा सा पागलपन ज़रूरी है. दैट्स जस्ट अ रैंडम स्टेटमेंट विच केम इनटू माय हेड, क्योंकि आई रिमेंबर कि कितना काउंटलेस टाइम्स मैंने एफर्ट डाला है. जब आई मीन इट वॉज लाइक, आई वोंट से कि बहुत ईजी था मसल बिल्ड करना या बहुत लीन हो जाना या अल्ट्रा लो बॉडी फैट पे चले जाना. दैट्स नॉट ईजी. लाइक इट टेक्स अ लॉट आउट ऑफ यू. हर तरह का यू आर सेक्रीफाइसिंग थिंग्स राइट एंड लेफ्ट कि मुझे ये चीज़ अचीव करना है, यू आर गेटिंग देयर. तो वो दिखता है, बट लाइक व्हेन पीपल ट्रीट इट लाइटली या दे डोंट टेक इट सीरियसली वाला चीज़, प्लस और इफ़ दे ट्राई टू रश इनटू थिंग्स, कुछ भी हो सकता है. लाइक एक तो या तो होता है कि कभी लगेगा नहीं इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल जैसा तो नहीं. लाइक मुझे भी नहीं पता था कि कभी मैं भी 6 एब्स निकाल के घूमूंगा, सोशल मीडिया पे फोटो डालूंगा. कभी इमेजिन भी नहीं किया होगा मैंने कि मैं कभी 100 किलो की डेडलिफ्ट मार लूंगा. ऐसा ये कौन इमेजिन करता है कि मेरे से पॉसिबल होगा? बट इट हैपन्स वंस यू लाइक एक्सेप्ट, लाइक यू सेड राइट, यू हैव टू एक्सेप्ट द लो डेज वाला फेज भी. यू हैव टू एक्सेप्ट इट. और कोई ऑप्शन है क्या आपके पास? एक्सेप्ट करो, मूव ऑन करो. लाइक सेलिब्रेट द स्मॉल विंस. वो चीज़ को भी थोड़ा इंपॉर्टेंस दो कि मैंने आज इतना किया. जैसे आज ही यू सेड राइट कि जिम जाने का मन नहीं था बट यू वेंट एंड पीआर भी कर लिया. बट तो इस तरह के डेज भी होते हैं. यू वोंट गेट इट अनलेस यू लाइक स्टिक टू इट, फोर्स योर सेल्फ. और आई थिंक यहाँ पे वो वीक माइंडसेट वाला, मैं इसको लाइक मैं भी ब्रूटली इस चीज़ को रख देता हूँ कि सम पीपल जस्ट हैव अ वीक माइंडसेट. अगर वीक माइंडसेट रखोगे तो नहीं होगा. यू हैव टू लाइक जस्ट सक इट अप एंड just get in. Do it. Exactly. रिकवरी एंड वो पार्ट तो आएगा, वो अपनी जगह पे है, इम्पॉर्टेंट है. ऐसा भी नहीं है कि आप कम सो के हीरो बन सकते हो कि हाँ नहीं मैं उसके बाद भी इतना उठा ले रहा हूँ. दैट ठीक है, हीरो बनना है बनो, बट लाइक इट्स नॉट ऑप्टिमम. ये सबको पता है कि ऑप्टिमम नहीं होगा हाँ, वो. यू कैन हाँ, डू सो मच बेटर. वैसा चीज़ लाइक रियलिटी सबको पता है इस चीज़ की कि इट्स लाइक अ फैक्ट. ये चीज़ होगा, अगर आप इतना रेस्ट कर रहे हो इतना परफॉर्मेंस आपका बढ़ेगा. या आप देख भी चुके हो, एक्सपीरियंस कर चुके हो, उसके बाद भी जो आप डिसीजंस बना रहे हो, देन यू हैव टू एक्सेप्ट इट. बट आई सी दिस एज अ मेजरली एक माइंडसेट वाला प्रॉब्लम. आई एम नॉट श्योर कि उसको फिक्स कैसे किया जाता है. आई थिंक इट गेट्स फिक्स जब आप खुद से एफर्ट डाल के रिजल्ट देखो. रिजल्ट ही इज़ समथिंग विच आई थिंक मोटिवेट्स, लाइक एटलीस्ट द बिगिनर वाला फेज जो होता है कि उनको तो रिजल्ट ही मोटिवेट करता है. मेरा yeah, पर्सनली मैं बात करूँ तो द फर्स्ट थिंग विच मोटिवेटेड मी वॉज कि मैंने खुद से 1-2 पुल अप मार लिए थे. वो भी नहीं होता था मेरे से कभी. तो दैट्स वॉट केप्ट मी गोइंग टू द जिम. की जिम जा रहा हूँ, कुछ नहीं चेंज हो रहा है. एंड आफ्टर गोइंग टू द जिम फॉर अ कपल ऑफ ईयर्स, मुझे पता भी नहीं था कि बॉडी में चेंज क्या. मुझे तो पता भी नहीं था कि कैसे पता चलता है मसल कितना ग्रो. मुझे कुछ नहीं आइडिया, बस कर रहा हूँ, जाके कर रहा हूँ. लाइक कॉलेज जाओ सुबह से शाम, देन जिम जाओ, फिर अपना जो काम करना है करो. दैट वाज माय रूटीन. लाइक माइंडलेसली मैं रोबोट की तरह मैंने ये किया है फॉर द इंटायर माई कॉलेज लाइफ. अभी थोड़ा सा कंप्लेसेंट हो गया हूँ बिकॉज रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अब थोड़ी सी बदल गई हैं मेरी. तो उस टाइम आई हैड yeah, टाइम एंड प्रायोरिटीज़ कुछ नहीं था ऐसा कि इसका ध्यान रखना है उसका ध्यान. अभी लाइक आई हैव सम एडेड सम चीज़ें, बट लाइक इट्स बेसिकली इट. इसमें एक और चीज़ आई वांटेड टू ऐड वाज आई हैव लाइक अनदर ह्यूज रिस्पेक्ट फॉर जो पेरेंट्स होते हैं जिनके छोटे बच्चे होते हैं एंड दे आर स्टिल मेकिंग टाइम आउट टू डू ऑल ऑफ इट. yes, लाइक मैसिव रिस्पेक्ट. लाइक हैट्स ऑफ. कैसे करते हो मुझे नहीं समझ आ रहा है, कैसे ही मैनेज करते हैं वो लोग. लाइक टाइम सबके पास उतना ही होता है, प्लस दे हैव एन एडेड रिस्पॉन्सिबिलिटी बच्चे का. लाइक इट्स एन इम्पॉर्टेंट थिंग. can I just say, या I also actually respect those people who have corporate jobs, and they still make time to actually go like bonkers on their training, even if they do it like 2 or 3 days a week. They go full on. They're like, see, I have had like very sensible clients, very, very sensible, and I'm very lucky to say कि I've had sensible clients. Okay, because they would understand कि and I'm brutally honest with people. Like अगर आप नहीं करोगे तो नहीं होगा. मैं मुंह पर बोल देती हूँ कि आपका फिर पैसा बर्बाद है. मैं पैसे वापस नहीं करूंगी आपको, वो that's a different issue. But then I'm just telling you that if you won't do it, then you're not going to see any difference.
because you need to challenge your body. और आप मैं आपका कितना खाना कम कर दूं, कितना खाना कम कर दूं, okay? Mm-hmm. If you want to actually look lean, you kind of have to make an effort to be lean, okay? ऐसे नहीं होता है, alright? So अगर आपको जिंदगी भर 2.5 किलो के डंबल से कुछ और, mind you, उनको सिर्फ डंबल्स उठाने में प्रॉब्लम है, अपने बच्चों का 10-10 किलो का बैग वो आराम से उठा लेंगे, Mm. ओनली बिकॉज उस पर 10 किलो लिखा नहीं होता है, ठीक है? Mm-hmm. So I was like, if you want to do it in a bag, like put some आप bag खरीद लो अलग से and just put some books and all that in it. I don't care. If that motivates you to actually lift more, then do it. Certain housewives जो कि they have broken barriers of their mindset, because they had some preconceived belief systems and they were able to move past it. To me, that is also very commendable, because I think mental barriers are the only thing that stop you from actually achieving your true potential. Correct. So anybody who is able to do that has my respect. Makes sense. एंड ये सब देख के लगता है कि हाउ मच आई एम लीविंग आउट, कि मैं और कितना और पुश कर सकता हूँ, कितना और एफर्ट डाल सकता हूँ. इट मेक्स मी रियलाइज दैट कि अपने अंदर भी थोड़ा और पोटेंशियल है. यू कैन स्क्वीज आउट दैट एक्स्ट्रा जूस अपने अंदर से जस्ट टू गेट Yeah. बेटर एट इट. सो या दैट कीप्स मी मूविंग ऑन सम डेज, जब लगता है कि वर्थ इट है, नहीं वर्थ इट है, वैसा फील आता है कभी कभी. And also, I think because we have such clients, right? That actually motivates at least me, okay? Because when I see people working so hard and they have a harder life than I do, I just feel so motivated by that. I'm currently training one guy who is an MBA student. उसकी दिन की सुबह की जैसे ही सूरज उगेगा उसकी क्लासेस शुरू हो जाएगी. Okay, so he has to wake up at like around 6 a.m. or something, 5:30, 6 a.m. He has to go to classes, पूरा दिन classes, and then वो थका हुआ हारा हुआ जिम जाता है. Can you imagine? And then he's like, you know what, ma'am, I'll do it. I'll do it. मुझे बस ये है कि मेरा थोड़ा सा टाइम कंस्ट्रेंट इतना रहेगा कि मैं सिर्फ 1.5 घंटा दे पाऊंगा. ही इज विलिंग टू गिव 1.5 hours. 1.5 hours, and I'm sitting here complaining कि मेरा मन नहीं कर रहा है जाने का. So that actually gives me some sort of motivation, believe it or not, because I have such amazing clients. And to me, I think you can seek inspiration from your own environment. You don't need to go to Machiavelli motivation or something like that. You can just look for it in your environment, in your own environment. My mom inspires me a lot. I mean, don't tell her, but yeah. Like, she has been a single mother for what? Since my dad died, and we were like, me and my siblings were really little kids. Okay. So she has managed everything. She manages the home, she manages the office, she manages everything. ठीक है, मुझे घंटे का कुछ नहीं करना पड़ता घर पे. And whatever little I have to do, it's bonus. It's not even like कि उनका काम नहीं चलेगा. No, she'll be fine even if I don't do certain things, right? So because I've grown up in such an environment, I feel that I'm privileged in a way, because I've had I've had certain examples and set in front of me which provided me that mindset, right? So Yeah. I also take inspiration from my dogs, because they've had like a pretty hard life as well. They're adopted. So yeah, again, you just need, if you really want to find inspiration, it's all around you. आपको बस देखने की जरूरत है. देखना एंड उसको लाइक एक्सेप्ट करना, लाइक यू हैव टू जस्ट लाइक रजिस्टर उसको चीज को You have अपने. to be open as a person. करेक्ट. Yes. Yeah. Most people are not, which is fine. But then you are limiting your own potential as a human being. You are a class tier. This is just me, but you're a tier 3 sentient being. Have some respect for yourself.
आफ्टर दिस स्टेटमेंट मेरा जो एक थॉट आया अभी मन में, इट वाज आई डोंट नो रैंडम था, मुझे स्टार वॉर्स जाके देखना है, मुझे ऐसा फील आ रहा है अभी से। आई हैव टू रीवॉच द होल थिंग अगेन, ऐसा जस्ट टू चिल, ऐसा फील हो गया बट I kind of like the whole Marvel Wally movies. I actually saw Dark Phoenix yesterday, and that kind of was like nice touch. It was a shit movie with a shit script writing, but nonetheless, I actually like Jean Grey, so everything is fine. as long as something is nice. Yeah, it is. Okay. VFX is absolutely amazing, but yeah. Okay. So Yeah, getting back to our conversation. yes, So we discuss a lot of things, but यहाँ पे जैसे you touched upon कि you have a coach अभी, but like how important is having a coach? I would say very important because here's the thing. Believe it or not, I'm a very stubborn person, and I like to think I'm a little bit intelligent. Um, थोड़ा Hmm. बहुत, ज़्यादा नहीं. Hmm. So I like to take everything with a grain of salt. So when I started training under Vedant, uh, whatever cues he used to give me, I used to take it on my ego. Right? It was Hmm. like, oh, मेरे में नुक्स निकाला है, मेरे में गलती कैसे निकाली, and all that. And then I realized that it's his job, and he just wants me to do actually really good. From that point onwards, we have a very very good bond, I would say. But then that's just me and him. Okay. Um, you can have no bond with your coach, and your coach still can be very very helpful to you. Okay, because they understand certain things which as a person who's not an expert, uh, you do not. It's kind of like going to a doctor for, because you feel an infection, or if you don't feel good, Yeah. getting an expert opinion. It's like going to a lawyer because you are in trouble, legal trouble. Okay, it's like going to a property dealer because you want to buy a new house or rent a new house. Right, Hmm. you go to the experts for certain things. My coach is an expert in what I wanted to pursue, which is actually lifting heavy ass shit. Okay, so from that perspective, I've actually learned a lot from him. This is, and again, something that people need to understand, that whoever your coach is, you get to learn from that person so much, not just like from like a आपको सिर्फ ट्रेनिंग और ये न्यूट्रिशन और इन सब चीज़ों के बारे में नहीं, just in general. Like when you read a book, you learn something, you get something out of it. It's basically the same thing, only better, right? Hmm. Because you are in direct, like right now we are learning from each other because we are exchanging thoughts. That is exactly what a coach does, because not only a good coach is going to help you realize your own potential, but then they will also teach you things like about certain, I mean, I like to, but दूसरों का नहीं पता. So I like to like have an approach ki I teach certain things to my clients, so that at least even if they are not opting for my services again, they are well off, in a way कि उन्होंने कुछ सीखा है. So if they are in a similar situation again, they will be able to do fine even if they don't have a coach. They usually actually they rehire me, which is why मेरा घर चल रहा है. But yeah, coach having a coach in life is just important. From like अभी मैंने 2 पॉइंट रखे, तीसरा पर्सपेक्टिव ये हो सकता है कि you're just too busy in your life. Like I just said कि majority में मेरे जो clients हैं, they have like a corporate job or something. Okay, so what happens is because of that they don't have time. उनके पास सिर्फ इतना टाइम है, या तो वो खुद फिगर आउट कर ले या तो वो कर ले. ठीक है, so the figuring out part is my job. They pay me for that, and I tell them what they have to do. जितना टाइम है उनके पास बचा हुआ, so they do it, and they do it efficiently. I think this is one point कि जहाँ पे जो beginners होते हैं, I think they really need a coach.
they require a coach. Why? Because you don't know the nooks and crannies of certain things. A coach would, because again, experience and expertise. So from that perspective, I would say, yeah, importance of a coach really, really high. I actually have a nutrition coach too. Does it mean that I don't know nutrition? No, but I cannot be fucked with like मुझे खुद का मुझे ख्याल नहीं रखना अभी. I let somebody else manage that shit for me. Delegation, as simple as that. I'm let somebody else manage that shit for me. I just do what I'm being told without putting extra mental energy into it. Because once this energy drains, आपको physical energy drain अगर हो गई, आप खाना खा के वापस से वो आ जाएगी, राइट? सो जाओगे, वापस से आउटपुट होगे, यू फील एनर्जाइज. But what about your mental energy? There's only so much that you get in a day, and if you actually waste it on certain things which do not really like, you can delegate that shit to somebody else. If you can do it. else you can just listen to podcast मेरे channel पे and सीख लो उससे. Again, yeah, exactly. Varnit's podcast is the shit. Yeah, but हाँ, it makes complete sense having a coach. मेरा पर्सपेक्टिव जब आई वॉज लुकिंग फॉर अ कोच वॉज कि मेरे दिमाग में रैंडम था कि मुझे स्टेज प्रेप करना है एंड आई गेट अ कोच एंड गेट स्टार्टेड, बिकॉज एक बार मैं ऑलरेडी लीन आउट हो चुका हूँ, तो आई नो कि क्या जाएगा, बट आई डोंट नो हाउ टू फाइन ट्यून दोज थिंग्स व्हेन यू Yeah. नियर दैट. मतलब वो इम्पॉर्टेंट होता है. ऐसे तुक्के में तो मैंने कर लिया, अपने से कुछ ना कुछ किया तो निकल आया. बट लाइक व्हेन जब जब स्टेज प्रेप के लिए प्रिपेयर करो तो यू हैव टू बी थोड़ा सा एक्स्ट्रा माइंडफुल एंड केयरफुल. बट इवेंचुअली वो स्टेज पे नहीं आ पाया, घर पे प्रॉब्लम्स था तो वो ड्रॉप हो गया. बट आई स्टिल कंटिन्यूड कोचिंग अंडर हिम. देन वहाँ से लाइक ये मेंटल वाला चीज़ मेरा भी था कि हाँ, मुझे भी पता है न्यूट्रिशन का, एक्सरसाइज का, बट इट फेल्ट सो रिलैक्सिंग कि अपना कुछ भी वरी नहीं करना पड़ रहा है. एंड यू जस्ट हैव टू, आपको पता है गाइडलाइन मिल गया, यू हैव टू स्टिक विद इन उस कंस्ट्रेंट में रहो, उसी चीज़ के अंदर रहो एंड यू आर प्रोग्रेसिंग. ज़्यादा लोड नहीं है. इट फील्स लाइक कि कुछ एक्स्ट्रा हेल्प ले रहे हो या जैसा ले रहे हो, जो भी ले रहे हो, बट आई थिंक इट्स वर्थ इट गेटिंग लाइक कोचेस के भी. कोचेस लाइक कॉमन है, ये सबके होते ही हैं, एटलीस्ट मैंने देखा है, अभी भी होते हैं. एंड द पॉइंट विच यू सेड कि बिगिनर्स को कोच का नीड है, मैं इसके साथ लाइक 200% एग्री करता हूँ. बिकॉज मैं इसको पर्सनल लेवल पे क्लोजली रिलेट करता हूँ, क्योंकि आई बिलीव कि मैं कितना ज़्यादा और बेटर कर सकता था चीज़ें विद द अमाउंट ऑफ टाइम आई डेडिकेटेड, अमाउंट ऑफ एफर्ट, मनी, हर चीज़ मैंने लाइक काफ़ी टाइम मैंने डेडिकेट किया जस्ट टू ये बॉडी बिल्डिंग वाले साइड ऑफ थिंग्स, कि हाउ टू गेट बिगर, हाउ टू गेट बेटर बाइसेप्स, ये वो बहुत सारा मैंने टाइम स्पेंड किया है. जब आई स्टार्टेड ऑफ तो आई स्टार्टेड ऑफ वॉचिंग श्रेयस कामत का यूट्यूब चैनल. लाइक आई होप पता ही होगा कौन है वो. सो या Imagine if I said Kuzi. एग्जैक्टली, मैं अभी आज ही मैसेज करता फिर उनको कि ये क्या हो गया, आप फेमस नहीं हो रहे हो. तो सो बट या आई स्टार्टेड ऑफ विद हिम. तो वहाँ से थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बूस्ट मिला कि हाँ, एक इंडियन इंसान लेजिट टिप्स दे रहा है, सजेशन दे रहा है, तो वैसा था. बट अभी कंपेयर करता हूँ उस चीज़ का, वहाँ से मतलब ऐसा लगता था, फील होता कि अगर हाँ, काश ये मेरे को कोच कर रहे होते, ये कर रहे होते, वो कर रहे होते. ऐसा फील होता है कभी कभी जब यू लुक अप टू समवन, या इफ़ यू Yeah. लर्न, देखो कि किसी से स्ट्रांगली रेजोनेट कर लिया, तो फील आता है कि हाँ, काश मैं इनसे कोच कर लेता, नो मैटर कितना पता हो चीज़ें या फिर जो भी हो. तो ये मैं लाइक पर्सनल थॉट्स जो आ रहे हैं, टेंजेंट्स आ रहे हैं, आई वाज जस्ट एडिंग ऑन टू व्हाट यू जस्ट सेड. So No, I actually like your personal inputs because it is giving me a chance to actually learn from somebody else. Again, it is all about learning for me. Like, हाँ, थोड़ा सा मेरे में कभी कभार ego आ जाता है, that's another thing. But then I think again, part of being a human, you get that and you just move on. I do that. I just focus on certain things which on um and believe it or not, Vedanta actually taught me so much about life in general. That guy is so much younger than me, okay? And he is so mature for his age. It blows my mind. Like uski age pe I was getting my heart broken by idiot boys. ठीक है? So I just saying, just
just having that perspective, like अगर उस एज पे मैंने वही सब चीजें करी होती जो मैं आज कर रही हूँ, things would have been so different. I would probably have been, probably a millionaire or something. So yeah. सो बेटर लेट देन नेवर वाला चीज़ आ जाता है यहाँ पे. दैट्स हाउ आई कंसोल माई सेल्फ कि हाँ अभी ठीक है, जो है उसी से चलाते हैं, आगे देखेंगे. आई थिंक आपको जिंदगी में तभी मिलता है वो चीज जो आपको मिलनी चाहिए, जब आपको मिलनी है. आई थिंक there is like whoever is listening, if you don't believe in it, I really don't give two fucks. This is something that I believe in, and this is actually something that gives me peace of mind. Okay. Okay. I believe in divine timing. Okay. That everything happened at one particular time, and there is a reason for that. We don't know that reason, which is fine. Mhm. Okay? But then imagine that agar uh, when Jupiter, when the solar system was very, very young, when Jupiter went like, zzz, okay, it was literally crashing into every single orbit. If Saturn का जो थोड़ा सा मोशन है और टाइमिंग है, अगर वो जरा सा इधर उधर होती, we probably wouldn't have existed. You know what I mean? Mhm. So I believe in divine timing. I believe that everything which has happened to you at the particular moment that it has happened, I think that was supposed to happen in that particular moment. या सो यहाँ पे आई ऐड अ वेरी पर्सनल एग्जांपल. यहाँ पे सबसे Okay? इजी एग्जांपल. सो अगर अमन खट्टर wasn't गोइंग लाइव विद यू दैट डे तो हम लोग फॉलो नहीं कर रहे होते और आज ये एपिसोड नहीं बना होता. तो सी. Yeah, exactly. So I think there is a higher thing to all of this. We just don't know, and we just cannot make sense of it. That's another thing, and I am all for it. Like, मुझे लगता है that when you manifest certain things, they become real. आई एग्री विद दैट. ये तो है. लाइक इस चीज़ के साथ वेरी स्ट्रॉन्ग बिलीफ है मेरा कि जब मैनिफेस्ट करना चालू हुआ, मिलेगा. कुछ भी करो, मिल ही जाता है. और बहुत जल्दी मिलता है. इनफैक्ट ऐसा नहीं कि इट टेक्स अ लॉट Yeah. ऑफ 10 साल वेट करो, ऐसा नहीं है. इट हैपन्स, दैट हैपन्स बिकॉज आई थिंक वो फोर्स भी करता है खुद को एक्टिवली एफर्ट डालने में उस डायरेक्शन में एटलीस्ट. सो यू फाइंड सर्टेन वेज. 2 वेज दिखते हैं तो 4 दिखने लगते हैं. Dude, no, even if you don't put in efforts, like even if you're like, obviously you can't be like, yeah, बिस्तर पे लेटे और manifest कर रहे हो, but then it actually brings you opportunities, like it attracts opportunities for you. Like for example, I was the reason this I think podcast happened is because I genuinely wanted to actually either start my own again, or just talk in general to somebody who is you know going to ask me out. So that was like a eureka moment for me. I was like, fuck. मैंने अभी दो दिन पहले इसी चीज के बारे में सोचा था, and I was actually positively thinking about it. I think what this actually relates to, how you should approach major lifts as well. So what I do is personal experience it. If there's like a major event or major lift coming in, um don't think about anything. I know people like to like go into the whole thing of thinking about certain things Mhm. that gives them push. If you overdo it, it's not going to happen. Personal experience से बता रही हूँ. Okay, just do it because you have to. All right. And I would suggest that um, visualize it once before. Hmm. Right? Once you visualize it, you yourself doing it, do you not feel more confident about actually performing? You will. Right? So in a way, that is going to actually help you. Manifesting your lifts kind of will help you. It's not going to be like कि मैंने आज 100 किलो उठाया तो कल मैं 200 का मैं हाँ. सोच के चली. That is unrealistic, and come on. Mhm. So from that perspective, sure, 200 होगा, but in due time होगा. You know what I mean? So yeah.
And this reminds me of some instances जहाँ पे like होता है right zone getting in the zone basically जिसको बोलते हैं before lifting या or testing out a PR या 1 rep max कर रहे हो जाके तो उस जोन में इवन इफ यू आर लाइक ओवर थिंकिंग बाय अ स्प्लिट सेकेंड आई फील कि लिफ्ट खराब हो जाता है मुझे लगता है इतना Yeah. लाइक स्प्लिट सेकेंड वाला कि हल्का सा भी थोड़ा कुछ हो गया ना या सेल्फ डाउट आ गया हल्का सा भी कुछ उस टाइप का या समथिंग नेगेटिव नेगेटिव भी नहीं बोलूँगा वही ओवर थिंक वाली चीज़ हो गई आई थिंक तब नहीं लिफ्ट होता इवन दो यू कुड हैव लिफ्टेड ऐसा है मैंने लाइक ये मैंने अपने में तो ट्राई किया है क्लाइंट्स का मैं पूछता नहीं हूँ कि आप क्या सोच रहे हो बैठ के लिफ्ट से पहले मैं इतना नहीं घुसता हूँ कि क्या कर रहे हो तो बट हाँ तो अपने में तो मैंने काफ़ी क्लोजली रिलेट किया है एंड रिसेंटली तो नहीं बोलूँगा 2 महीने पहले अप्रॉक्स आई वॉज टेस्टिंग माई डेड लिफ्ट का कितना मैं ज़्यादा हैवी जा सकता हूँ आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम आई कैलकुलेटेड वेट उस पर गलत मुझे नहीं पता था कि मैंने कितना वेट लगाया है मेरी मैथ्स वहाँ पे ख़राब थी बट आई थॉट कि मैं मैं 120 भी वही गलती करती हूँ. 125 130 कुछ उठा रहा हूँ देन टर्न्स आउट कि 145 या 150 कुछ था वो तो इसके ऐसा था डिफरेंस एंड आई वाज थिंकिंग कि हाँ 135 तो आज थोड़ा हैवी 20 लगा किलो का डिफरेंस ब्रो. दे- इतनी दे- गंदी मैथ्स भी नहीं है नहीं नहीं मेरी. मेरी है देन आई रियलाइज Okay. कि मैं कितना अंडर एस्टिमेट कर रहा हूँ अपने आप को और अपनी बॉडी को कि कितना डर के रह रहा था तब से तो ये चीज़ था जो Do लाइक you find it profound, like when this happens? Is it not very profound in that moment? Like मैं अपने आप को इतना कम समझ रहा था और just that is what was limiting me. Not my actual strength, not my actual potential. Just you not thinking that you had it in you. वहाँ पे एक जो कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है ना इतना लाइक इतना ऊपर जाता है कि Tenfold. Yeah. 10 भी उससे ज़्यादा इतना तो आया ही नहीं होता है कभी कॉन्फिडेंस ऐसा फील होता है तो बट या आई कैन रिलेट टू इट कि क्या हो रहा था ये कितना कितना और पोटेंशियल मैं कहाँ कहाँ छोड़ रहा हूँ ये सब बाद में होता है जब वो हाई नीचे आ जाता है तब आई स्टार्ट थिंकिंग कि व्हाट कुड हैव डन बेटर या और कैसे अप्रोच की जाए चीज़ें तो ये था बट नेक्स्ट थिंग जो इससे मैं ट्रांजिशन करना चाहूँगा वो है लाइक सप्लीमेंट्स का रोल स्पेशली प्री पोस्ट वर्कआउट के टर्म्स में अगर देखा जाए लाइक Okay. सम पीपल यूज़ कैफीन सम पीपल यूज़ अ प्री वर्कआउट कई कंपाउंड्स का कॉम्बिनेशन कुछ लोग कुछ नहीं यूज़ करते हैं मेरी तरह पानी पी के चले जाते हैं तो बट इट्स लाइक मैं भी कि आज चाय पी के गई थी सी सब बस. प्री वर्कआउट सबका अलग है यहाँ पे बट लाइक व्हाट्स योर टेक या व्हाट्स योर इनपुट ऑन दोज कंपोनेंट्स Okay, so if you're just a recreational lifter, इतना matter नहीं करता, honestly. But you should take certain things which have like research backed up, like time after time after time. It's like something which has stood the test of time. Okay, for example, protein powders. It's just convenient. ठीक है. बिकॉज मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं जबरदस्ती खाना बनाऊं 4 बार दिन में. आई जस्ट आई जस्ट प्रेप एटलीस्ट 3 meals. चौथे का आई जस्ट मैं मिक्सर में वो प्रोटीन पाउडर्स और दूध डालूंगी एंड देन आई मिक्स इट एंड देन आई ड्रिंक इट. इट्स दैट इजी. व्हाई वुडंट एनीबडी लाइक पीपल मेक इट सो कॉम्प्लिकेटेड. हमें वे प्रोटीन लेना चाहिए क्या? ले लो भाई ले लो. या अगर आपकी पॉकेट अलाउ करती है तो ले लो. हमें क्रिएटिन लेना चाहिए क्या? उससे उससे क्या कहते हैं हमारे किडनी में स्टोन्स तो नहीं बनने लगेंगे? लेकर देख लो. अगर बनते हैं तो छोड़ देना. What can I tell you? Like, see, the thing is that if I talk with logic with certain questions, it becomes I have to stoop down to that level. You know what I mean? It's kind of like no fap question. कि अगर if I fap, then क्या मेरे गेन्स कम हो जाते हैं? भाई करके देखो मैं क्या बताऊँ इसमें तुम्हें? I haven't done it, so I don't know. I don't have that problem. I don't have a male genital, I guess. So I wouldn't know what you're going through. So from that perspective, I think it's just easier for you to be able to do things and see if it works for you. As simple as that. So creatine, I believe, is beneficial for everybody, even if you're not lifting. Okay, because it does have ties to, I believe, some cognition, and because it is made up of things like
मुझे exactly याद नहीं आ रहा, if I'm not wrong, it's glycine, it's cysteine, and one more thing which I don't remember. मैं भी चीजें भूल जाती हूँ, that's fine. टेक्निकल टर्म से तो मेरा दूर का नाता है, unless I'm preparing for a That is just 3 amino acids which I don't, the third one I don't remember. So these 3 amino acids, they are actually really beneficial. Glycine in particular is good for your joints as well. Okay, so should you take creatine? Yeah, you should. The easiest, the most abundant found and the most researched on variant is monohydrate. ठीक, और भी है, अगर आप लेना चाहो आप ले सकते हो, बट जिस चीज पे रिसर्च हुई है आप वही यूज करके देख लो, आपको इतना कॉम्प्लिकेट क्यों करनी है चीजें. सो go with a monohydrate, cheap as hell, and it actually works because it has been proven time after time, right? Yeah. Protein powders, again, just a general thing. Caffeine अगर आपको यूज करना है, I don't personally like using. बीच में मैं कर रही थी because मेरा workload ज़्यादा बढ़ गया था, but then I just desensitize myself. मैं अपना caffeine कम कर देती हूँ. But if you have ठीक ठाक, like if you don't build up tolerance very fast, I would say yeah, go for it, no problem. But people do build up tolerance very fast. So the thing you can do with caffeine is up low, and then beach mein kuch din either just don't take it at all, or just make sure that you are desensitized to it. Otherwise aapko aur zyada dosage karni padegi. It's unnecessary. I also think fat burners work, and I call them typically, usually जो बहुत ही ट्रेडिशनल फैट बर्नर्स है उनमें 2 इंग्रेडिएंट्स होते थे, कैफीन एंड एफेड्रिन. एफेड्रिन बैंड हो गया है, एंड कैफीन इज जस्ट मेटाबॉलिज्म लाइक बूस्टर. it really gets you going. Okay, plus at the same time इसका ये benefit भी है. So if you're on a fat loss, or if you do introduce caffeine, it's going to help you. Why? Because it also suppresses appetite to some extent. Yeah. So again, there are like layers and layers of benefits. It's just, it has to be right for the person. There are many more, but do you really need them? That again depends on the person, and what their goals are, and if it really fits with their goals. Okay. So for example, if you are deficient in vitamin D3, just take a vitamin D3. Okay. आप कंटिन्यूसली लेते रहो. मैं लेती हूँ, मेरी डेफिशिएंसी नहीं है, बट आई स्टिल टेक इट बिकॉज इट्स नेसेसरी, एंड अगेन डिपेंड्स द नीड ऑफ अ पर्सन. आई ऑल्सो टेक मैग्नीशियम, अगेन नीड ऑफ अ पर्सन. जरूरी नहीं है कि वर्नित भी ले रहे हो, मैं ले रही हूँ, एंड इट हैज प्रूवन टू बी बेनिफिशियल फॉर मी. आई ऑल्सो टेक अश्वगंधा. अगेन कुछ मुझे फील नहीं हो रहा, बट आई स्टिल टेक इट बिकॉज मैंने खरीद लिया है. So yeah, different supplements have different value to a person. As a general rule of thumb, 2 or 3 that I recommend, I would say, to everybody is creatine and whey protein. My mom actually takes whey protein and creatine. Nice. So yeah, and it's going to actually help her. Specifically, if somebody is older, I definitely recommend that they start taking whey protein and creatine. Yeah. Creatine in particular, because it actually helps with the cognition. Like, it helps in general. Okay. So yeah, from that perspective, yes. Oh, also, I believe that अगर आपको specific कोई issue है, बहुत specific, for which you kind of have to get like a blood test done, then you should definitely consult your doctor for that. Because ऐसे किसी के बताने पे मत लेना शुरू करो. Because the doctors can actually read that blood report थोड़ा better way में उसको, like they have been trained to do that. उसके लिए. Yeah, they can find connections which we don't know. Yeah. And there is a reason why they're doctors. They have been doing this for like a majority part of their lives. And this has fucked their lives to the point that they don't think about anything else. So I believe that doctors
again, they, because they're experts in their own right, I think you should let them do their job. अगर आपको कुछ भी problem लग रही है, just go to a doctor, get a blood test done, get it checked. If you feel that there is something lacking, the doctor is going to actually recommend you certain things to do. Yeah, makes sense. And these are more or less the supplements that I use or recommend to people as well. I mean, इसके अलावा it's again case to case basis only. कोई कमी है तो ले लो, नहीं है तो मत करो. मेरे केस में विटामिन डी लेवल्स कुछ ज़्यादा ही थे तो मेरे को सप्लीमेंट ही बंद करना पड़ गया था. लाइक इट क्रॉस दैट 70 का टारगेट, लाइक 70 के ऊपर चले गए थे मेरे विटामिन डी के लेवल्स. तो Okay. तो टॉक्सिसिटी हो जाती मेरे को. तो Elite genetics for vitamin D. और आई वॉजेंट इवन सप्लीमेंटिंग दैट मच उस टाइम पे. आई थिंक कितना मे बी 1800 होगा, 800 Can you 800. like fly or something, because you probably might be close to the sun. You were getting I'm not so sure कि कैसे मेरा इतना हाई गया. I wasn't even like consuming वो 60,000 IU वाले sachet or something like that. yeah. So like normal था, like high protein eggs वगैरह ये सब था चीज़ें. But I don't know, ठीक है जो भी था. But I had to stop supplementing. ये conclusion ये था. So Yeah. that was the case. Apart from this, whey protein is my staple. मेरा best friend है, चाहिए ही. मतलब जिंदगी आसान करता है वो. तो Exactly. और Especially if you're traveling, right? करेक्ट. ट्रैवलिंग भी लाइक इवन मेरे कुछ डेज होते हैं इतना आलस होता है कि आई वुड रैदर जस्ट हैव 3 scoops ऑफ वे प्रोटीन देन हैव अ मील या कुछ. आई एम लाइक टू लेजी टू लाइक ठीक है. High five. तो इस तरह से लाइक थोड़ा सा जीवन काट लेता हूँ मैं. बट ठीक है, इट वर्क्स. सो Yeah, it works because see, I am swole as hell. I mean, I would like to think so. Yeah, you And I can skip meals. I have skipped meals. मेरे like cut this part. If Vedant, अगर वेदांत ने सुन लिया, he's going to have my ass because I have a competition. I cannot be eating less, but yeah, okay. I'm just curious, अभी कितना कैलोरीज यू आर कंज्यूमिंग पर डे लाइक? Because I have to cut weight, right? But I can't cut like a lot of calories because then I won't be able to perform. So I've seen, again, this comes from experience. I've seen that I do pretty good around 1600 calories. That is deficit for me, by the way. Okay. I can eat like in around 2000 calories and be fine. That's my maintenance. ठीक है, मेक सेंस. एंड लाइक इसमें जो हम लोगों ने डिस्कशन किया, इट वाज हर डायरेक्शन में. आई वुड से एक पॉइंट से वी वर जम्प्ड ऑन टू डिफरेंट साइड. एंड इवन जो फिलोसफी भी आई राइट बीच बीच में डिफरेंट सब्जेक्ट्स को लेके. दैट वाज द बेस्ट पार्ट. आई एंजॉयड इट थॉरली. बट लाइक बिफोर आई लाइक रैप अप दिस पॉडकास्ट, व्हाट वुड बी दोज 3 थिंग्स दैट एक इंसान को नहीं करना चाहिए when they are starting out their lifting journey? Think of it as a gen pop के perspective से, या maybe like normal person just going to a gym irrespective of gender. Don't get disheartened. Number 1. Okay? Don't get disheartened. Okay? Because people lose hope pretty, maybe it's just a social media age or something, because instant gratification is the shit. Things that, देखो, हमारा पूरा ब्रह्मांड इस लॉजिक पे बना हुआ है. कितना मुझे नहीं पता, but I know for a fact that if you really want something in life, you kind of have to really really work for it. Okay? And if it's worth having, ठीक, imagine that promotion that you really really wanted. ऐसे ही मिल गया क्या आपको दूसरे दिन पे? आपके बॉस ने कहा यही बंदा है या यही बंदी है जिसको मैं प्रमोशन दूंगा? नहीं, you had to work your ass for it. ठीक है? Yeah. And it's a kind of similar thing here. ठीक है? कि you kind of have to do it. You kind of have to make sure that you don't lose heart in the process. क्योंकि आपको दिखेगा लोग आपसे ज्यादा वेट उठा रहे हैं या आपसे पतले हैं या they are showing off their bodies. They work for their bodies. Yeah. Right? Work for yours as well, and you will get it, but it's going to take time. Muscle building is a slow and fucking tedious process. Makes sense. Right? Yeah.
I think there's a lot to learn, especially when it comes to mindset वाला part from this episode. माइंडसेट के ऊपर तो आई थिंक हम लोगों ने चार तरफ से अटैक किया है उसके ऊपर. So yeah, so Don't be a sissy. correct. Okay. Don't be a Don't be a snowflake. sissy at Don't the be a gym. snowflake. Don't be a snowflake. Exactly. Yep. Don't be a snowflake. Get those extra reps in. अगर आपको वेट कम करना पड़ा बिकॉज आपसे वो चीज नहीं उठ रही, do it and do 4 more reps. Yep. And yeah, thank you for joining, and let's do this again someday.